Welcome back to my YouTube channel. Myself, Joshi. In this video, we are going to cover Jan 2026 RTP, latest RTP, very important. Not just question and answers. If you see, questions have been asked from all these concepts. So what I've observed is, ये concept either amended है या newly inserted है. So very important. Not just questions, we are also going to cover the concepts. So this is your concept notes, and you can find this in the Telegram channel. So I request you guys to watch this video in one shot, next 30 minutes. Surrender it to me. You don't have to see any other book because concept notes यहाँ पे, RTP यहाँ पे. So you don't need anything, no distractions at all. Just finish the video in one shot, and yeah, along with concepts, we are going to cover the questions. Okay, so let's see the question first. So the first question talks about whether any tax is required to be deducted. Whether any tax is required to be deducted on purchase of apartment by Mr. Shivam and Mr. Jeevan. ठीक है, is talking about purchase of apartment. So if the amount is more than 50 lakhs, you have to deduct TDS. Section 194 IA. Okay, let's see where is this question. Mr. Jeevan and Shivam. No, here is not talking about that. Purchase of books of accounts and all. Okay, so here if you see on 12/3/2025, Mr. Jeevan and Mr. Shivam purchased an apartment from Mr. Rohan Mehta for 70 lakhs. Okay, 35 lakhs each is paying. So ultimate consideration is 70 lakhs. And then the stamp duty value is only 48 lakhs. Okay, consideration is 70, stamp duty value is 48 lakhs. Okay, the consideration amount includes 2 lakhs towards car parking and 50,000 towards maintenance fees. Okay, there are three things which are involved in this. I've highlighted that. First of all, there are two buyers. See, Mr. Jeevan and Mr. Shivam, they both are paying 35 lakhs and 35 lakhs to Mr. R. Okay, individually if you see, the amount is less than 50 lakhs, they're paying only 35 lakhs. So if the amount is not more than 50 lakhs, no TDS applicability. First case. Second is car parking and what is that? 2 lakhs towards car parking and 50,000 towards maintenance fees. It is also included in the consideration, whether that should be included or not. Third question. Here consideration is 70 lakhs, but the stamp duty value is only 48 lakhs. So if you consider stamp duty value that is less than 50 lakhs, TDS provision applicable in hota. What should we do? First of all, you should take the aggregate value. In case of two buyers or even two sellers, you should see the aggregate value. Here 35 plus 35 is 70 lakhs. So obviously the that is more than 50 lakhs. So Mr. Jeevan has to deduct 1% TDS on 35 lakhs. Mr. Shivam has to deduct 1% TDS on 35 lakhs. Okay, ultimately Mr. R के ऊपर पैन के ऊपर 70 lakhs जाएगा. करेक्ट, मतलब मिस्टर आर के पैन में 70 lakhs दिखेगा. ओके, सो टू बायर्स है तो अग्रीगेट वैल्यू लेना. कार पार्किंग एंड मेंटेनेंस, कार मेंटेनेंस एंड पार्किंग फीस इज एक्चुअली इंक्लूडेड. ओके, यू शुड नॉट एक्सक्लूड इट, and here it is included, so you don't have to do anything. It is already included in the consideration. Don't do anything. Now consideration and stamp duty value. Consideration is 70, stamp duty value is 40 lakhs. So you should take whichever is higher. This is what the section says. So you will take 70 lakhs. Okay, now let's see what the options are. So answer is he has to deduct TDS. They have to deduct TDS 1%. No, TDS is not deductible. नहीं होता. Yes, tax is deductible 1% on consideration payable, excluding car parking fees. No. You have to deduct tax, but at the same time, you should include car parking fees and maintenance fees. No, tax is not deductible because stamp duty value is less than 50 lakhs. Stamp duty value is less than 50 lakhs, but you will take whichever is higher, consideration or stamp duty value. So we are considering 70 lakhs, so wrong, TDS deductible. Yes, TDS is deductible 1%, including car parking fees and maintenance by Mr. Shivam and Jeevan. The answer is correct. So D is your answer. Next question. What will be considered as block period? ठीक है. So for the purpose of this section 158B in this case. First of all, block period मतलब ये block assessment के chapter में से question आ गया, तो उसके लिए थोड़ा block assessment के concepts भी we are going to see. So before that we will see where they have asked this question, in the case scenario. So if you see, a search under section 132 in the business premises of Mr. Rohan was conducted on 10th December 2024. During the current year, search हुआ 10th December 2024 को, and the last of the authorization was executed on 18th December 2024. Last day of authorization was 18th December 2024. ठीक है, तो here if you see, starting date है 10th December, last date of search है 18th December. तो start date को ignore कर दो, बस last date को देखो. Because while determining your block period, no, so when block assessment happens, first of all department search करता under section 132 and 132 है. ठीक है, search करते टाइम उनको कुछ undisclosed income मिल जाता, then department will trigger, they'll say block assessment करना चाहिए. So when they do block assessment, they will determine the block period.
ओके, ब्लॉक पीरियड में सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स आर इंक्लूडेड. ओके, सो लास्ट 6 ईयर्स आ जाएंगे बिकॉज करेंट ईयर में सर्च हुआ, 10 दिसंबर को सर्च हुआ. लास्ट 6 ईयर्स विल बी इंक्लूडेड एंड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू द लास्ट डेट ऑफ द सर्च. ओके, करेंट ईयर का लास्ट डेट ऑफ द सर्च इज 18 दिसंबर. ओके, all this will be under your block period. Understood? Last 6 years, current year 1 April से लेके what is the last date of your search. Okay, here the last date of search is your 18th December 2024. So that is your block period. Okay, let's see the options. तो यहाँ पे assessment year के हिसाब से दिया, ठीक है. तो if you see, so what is the assessment year last 6 years बोले तो we are in the financial year 2024 and 25. ठीक है, वी शुड टेक लास्ट 6 ईयर्स. तो 1 2 3 4 5, तो इसका फाइनेंशियल ईयर आएगा 2018 एंड 19. सिंस द आंसर इज गिवन इन असेसमेंट ईयर, यू हैव टू डू मेक इट एन असेसमेंट ईयर. 2019-20 विल बी इट्स असेसमेंट ईयर. ओके, तो दिस इज़ द करेंट ईयर, राइट. वी हैव टू टेक लास्ट 6 ईयर्स, तो इसका असेसमेंट ईयर भी हो जाएगा 2024 एंड 25. ओके, I hope you understood this. Assessment year financial year का concept है. तो the answer will be, wait, so this is assessment year 1920 and assessment year 2024. Last 6 years are included and also from 1st April 2024 to the last date of search, that is your 18th. So option C is your correct answer. Okay, pause it. आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो, आपको आ जाएगा. But the ultimate concept is this only. ठीक है, लास्ट 6 years विल बी इंक्लूडेड. करेंट ईयर 1 अप्रैल 2024 से लेके व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ सर्च. इन आर केस द लास्ट डेट ऑफ सर्च इज 18 दिसंबर 2024. परफेक्ट, नो? ग्रेट. चलो, विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक असेसमेंट, मिस्टर रोहन मेहता हैज रिसीव द फॉलोइंग डिफरेंट ओपिनियंस. सो फॉर दिस थोड़ा ब्लॉक असेसमेंट के बारे में ज्ञान, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द ब्लॉक असेसमेंट इज इनिशिएटेड, नाउ द ब्लॉक असेसमेंट इज इनिशिएटेड, ठीक है, उसका सर्च करें, वहाँ पे कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम मिला तो ब्लॉक असेसमेंट हो गया. When block assessment is initiated, any other proceedings under section 143(3) हो या तुम्हारा ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस 92CA हो, all shall abate, स्टॉप हो जाते. ओनली ब्लॉक असेसमेंट कंप्लीट करना पहले, ठीक है. तो एनी पेंडिंग असेसमेंट्स अंडर सेक्शन 143(3) या 92CA shall abate. एंड देन टैक्स रेट इज़ 60%. अभी अनडिस्क्लोज इनकम मिला, उसका टैक्स रेट है 60%. क्लियर टिल हियर? देखो, अनडिस्क्लोज इनकम मतलब मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट है 270A में. दैट विल नॉट अप्लाई. अनडिस्क्लोज इनकम मिला, सो यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई 270A का पेनाल्टीज. 270A पेनाल्टीज आर नॉट अप्लीकेबल फॉर ब्लॉक असेसमेंट. क्लियर, नो? 270A नॉट अप्लीकेबल. 234A B C, बिकॉज अभी जब अनडिस्क्लोज अभी ब्लॉक पीरियड इनिशिएट करे ना, तो क्या इसका मतलब क्या? नाउ व्हाट नेक्स्ट? एओ विल सेंड ए नोटिस टू द असेसर. बोलता है कि ये ब्लॉक पीरियड जो है ना, ये सब पीरियड्स को ना तुम एक रिटर्न फाइल कर दो, मॉडिफाइड रिटर्न. नाउ यू फाइल अ रिटर्न फॉर ऑल दिस पीरियड. ओके, तो ही हैज़ टू डू दैट इन अ पीरियड ऑफ 60 days. ठीक है, विद इन 60 days ही हैज़ टू फाइल द रिटर्न. इफ ही फाइल्स द रिटर्न, देन असेसिंग ऑफिसर विल सी द नंबर्स, रिमूव द टैक्स लायबिलिटी, वेदर करेक्ट है कि नहीं, वो असेस करेगा. अगर नहीं करा within a period of 60 days, if he does not file the modified return, then in that case interest of 1.5% per month will be levied. Clear, no? If the return of income is not filed within 60 days till the assessment is closed, okay, then return of 1.5 interest will be charged. That will be there till the assessment is closed, not till the date of filing of return. Till the block assessment is closed, no, till that time 1.5% interest गिरेगा. Clear, no? एंड देन सिंस दे आर फाइलिंग अ मॉडिफाइड रिटर्न, 234 ABC में इंटरेस्ट जो लगेगा दैट इज ऑल्सो नॉट अप्लीकेबल. 270A पेनाल्टी इज नॉट अप्लीकेबल. 234 ABC इंटरेस्ट पेनाल्टीज आर नॉट अप्लीकेबल. ओनली इफ ही डज नॉट फाइल द रिटर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days, 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा. क्लियर, नॉट क्लियर? लेट्स सी, एक बार वो पढ़ लेंगे अपन केस सिनेरियो में क्या हुआ. So it came to the notice of the assessing officer that the assessment for financial year, assessment year 23-24 was pending. ठीक है, कुछ pending है, and as we discussed, if there is anything pending, any assessment pending, that shall abate. On the date of initiation of search, the assessing officer issued a notice on section 158BC for furnishing a return within 60 days. ठीक है, मैक्सिमम 60 days का टाइम पीरियड रहता, दे हैव टू फाइल अ रिटर्न विद इन 60 days. However, Mr. Rohan Mehta furnished the return after the expiry of 60 days. Okay,
60 डेज़ के बाद अगर फाइल करा तो 1.5% इंटरेस्ट लगेगा. The assessing officer, after considering evidence, determined total income of 1.05 crores and proceeded to levy tax at the rate applicable along with surcharge and cess. तो वहाँ पे कुछ टोटल इनकम मिला उनको 1.05 crores का, तो ऑन दैट 60% टैक्स लगना चाहिए. He also levied interest of 2% of tax on undisclosed income every month or part of the month for a period after the expiry of 60 days and ending on the date of completion of assessment under section 158 BC. ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा बिकॉज ही फाइल द रिटर्न आफ्टर 60 डेज, बट ही हैज़ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 2% लगाया. एक्चुअल इंटरेस्ट रेट शुड बी 1.5%. करेक्ट. नाउ लेट्स सी what options do we have. Okay, with respect to block assessment, receive the following different opinions. Pending assessment for assessment year 23-24 under section 143(3) on the date of initiation of search shall abate. 143(3) में assessment pending है ना, that shall stop, that shall abate. This is correct. Okay, pending assessment now. Pending assessment for assessment year 23-24 under section 143(3) on the date of initiation of search shall continue. It shall not continue. This option is wrong. Total income of 1.05 crores shall be taxable at normal tax rates. नहीं भाई, 1.05 crores it should be taxable at the rate 60%. So this is also wrong. Total income of shall be taxable at the 60% plus surcharge and cess. This is correct. Okay. So fourth one is correct. And then the last one is penalty under section 270A shall be applicable in respect of undisclosed income. मैंने them clearly बोला था 270A is not applicable. यहाँ पे देखे तो ना, if you see, 270A is not applicable only. So that is also wrong. So 1 and 4 are correct. If you see answer C, 1 and 4. Okay. Now, with respect to interest levied by assessing officer in respect of undisclosed income, they assessed for block period is correct. यहाँ पे इंटरेस्ट लगाया ना 2%. इफ़ यू सी द क्वेश्चन, नो यहाँ पे क्या हुआ, ही ऑल्सो लेविड इंटरेस्ट ऑफ 2% ऑन द टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर ए पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज. इन्होंने 60 डेज़ के अंदर रिटर्न फाइल नहीं करा, 60 डेज़ के बाद फाइल करा, तो उसके ऊपर 1.5% इंटरेस्ट लगेगा, नॉट 2%. ओके, तो लेट्स सी द ऑप्शंस. Yes, 2% interest on undisclosed income can be levied for every month. No, it cannot be levied. Simple. So no, interest of 1.5% per month on tax of undisclosed income can be levied every month or part of the month after the expiry of 60 days. This is correct. And ending on the date of completion of the assessment. So answer B is correct. Okay. यहाँ पे देखें तो और एक ऑप्शन है, दिस वन इज़ 1%. 1% तो रॉन्ग है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. 1.5% on undisclosed income can be levied every month or part of the month after the expiry of 60 days and ending on the date of furnishing of the return. No, it will end only when the assessment is complete. Only on the date of assessment is complete. Very important. I'm stressing because this is a new concept. यहाँ से questions बनने के chances बहुत हैं. Okay, not when you furnish the return. This is wrong. It will end on the date of completion of assessment. Okay, चलो next वाला. What are the tax implications of buyback of shares in the hands of Mr. Jeevan? Buyback of shares, again amendment. थोड़ा ज्ञान उसके बारे में. ठीक है, buyback of shares में क्या हो रहा? There is a company and it is buying its own shares from its shareholders. तो shares वापस ले रहा कंपनी, उसके लिए कंपनी is making the payment. shareholders को पैसा मिल रहा. Earlier कंपनी के हाथ में टैक्स होता था, shareholders के हाथ में exempt होता था. Now there is an amendment. It is taxable in the hands of shareholders only. Okay. Now, company is making the payment from where? Company is making the payment from accumulated profits only. Instead of companies paying the dividend, वो लोग buyback कर रहे थे. ठीक है, why and all we will discuss later. But dividend distribution tax थोड़ा high rate था, buyback थोड़ा income tax rate कम था. So that's the reason they used to give buyback instead of paying dividends to them. Perfect. So law ने क्या बोल रहा है? Buy. So even buyback is now treated as deemed dividend. Even if you do buyback, that will be treated as deemed dividend under section 222F. This is a new section that is inserted. This is a new amendment basically. Okay. Now, since it is taxable in the hands of shareholders, imagine when a person sells his shares, उसके capital gain में जाएगा based on his period of holding, short term या long term आना चाहिए, right? तो यहाँ पे थोड़ा change आ गया. Whatever amount that is getting from the company, whatever sale proceeds that is getting, that entire amount will go and sit in income from other source. Okay. Capital gain में कैसा होता था? Full value of consideration minus cost of acquisition, then you will get gain or loss. Okay.
Now this full value of consideration जो है that is going and sitting in income from other source. What about cost? This shareholder must have purchased those shares at some point of time, no? Then what about that cost? That cost will go and sit in his capital gains as a loss. तो जब कैपिटल गेन्स कर रहे होते हैं ना, उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज ऑलवेज नील. ओके, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे. ऑलवेज देर विल बी अ लॉस, कैपिटल लॉस. ऑलवेज देर विल बी अ कैपिटल लॉस. सो दिस लॉस ही कैन सेट ऑफ इफ ही इज हैविंग एनी अदर कैपिटल गेन. ओके, अगर उसको कोई और कैपिटल गेन है वो सेट ऑफ करता हूँ. अगर नहीं है, दिस विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स. ओके, बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पूरा सेल प्रोसीड्स आ जाएगा, पूरा टैक्सेबल है, इसको कोई डिडक्शन नहीं मिलता. क्लियर नो? बिकॉज वी आर ट्रीटिंग दैट एज डीम्ड डिविडेंड. बायबैक करें तो डीम्ड डिविडेंड है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ गया वो. ओके ना? सो बेसिकली लॉ इज़ नॉट एनकरेजिंग पीपल टू बाय बैक इट्स ओन शेयर. तो इतना याद रख लो, यहाँ पे दो चीज़ें हो रहे हैं. तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज गोइंग एंड सिटिंग इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एंड योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इन योर कैपिटल गेन्स एज अ लॉस ओनली. Always loss, you can set off with other capital gains. If you don't have any other capital gains, then carry forward it to the future years. Okay, perfect. ये हो गया तुम्हारा बायबैक ऑफ शेयर्स. लेट्स सी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया बायबैक के बारे में. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, 50,000 shares company has brought back. ABC Limited brought back 50,000 shares including 500 shares from Mr. जीवन. Mr. जीवन ने 500 shares दिया for 500 shares into 1250. सो दिस इज़ द सेल कंसिडरेशन. इतना पैसा कंपनी ने जीवन को दिया. सो इन द हैंड्स ऑफ जीवन इट विल गो एंड सिट इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हियर. ओके, नाउ मिस्टर जीवन हैज अक्वायर्ड दिस शेयर्स फॉर 200. सो 500 shares he has purchased it for what value? 200. Now this 1 lakh amount will go and sit here. Okay, 1 lakh will go and sit in his capital gains, and then whatever sale proceeds that he has got, 500 into 1250 will go and sit in his income from other source. Okay, now let's see the options. Easy है, not confusing at all. So long term capital gains, long term capital gain आता ही नहीं 525. long term capital gain आता ही नहीं, long term capital loss आता. So long term capital loss of 1 lakh, perfect. Okay, here also we have seen. Okay, 1 lakh यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 lakh loss है, and then what is that? The other one is 500 into 1250. Okay, 625 is his income from other source में. So if you see as deemed dividend, 625 would arise in the hands of Mr. Jeevan and capital loss of 1 lakh would arise. So option B is correct. Making sense? Perfect. एक बार आप भी पॉज करके सॉल्व करो, आ जाएगा. चलो नेक्स्ट वाला है केस, नेक्स्ट केस सिनेरियो. लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. What is the residential status करके पूछ रहा हूँ. What is the residential status of Mr. Amit for assessment year 24-25? ओके, तो देखना पड़ेगा इसको क्वेश्चन. ये देखो, अमित जो है इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में उसके फादर या ग्रैंडफादर थे, तो ही इज़ अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन. अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ऑल्सो व्हेन इंडिया वाज अनडिवाइडेड. तो उनके फादर ग्रैंडफादर यहाँ पे थे वो लोग. नाउ दिस फेलो रिसाइड्स इन दुबई. Okay, however, in order to expand his consultancy profession, he keeps visiting India. He is a person of Indian origin, resides outside India. He visits India, and then he keeps visiting India. He visits India for 90, 65, 70 and 80 days. ठीक है, लास्ट 4 years में उतना है. In the last 4 financial years preceding the financial year 24-25. During the financial year 24-25, he stayed in India for 135 days. प्रीवियस ईयर में कितना टाइम था? 135 days. ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया ही अर्नड इनकम ऑफ 9 lakhs फ्रॉम हिज कंसल्टेंसी प्रोफेशन. इंडिया में इनकम है देखो, 9 lakhs प्रोफेशन से है, डीम डिविडेंड से है, 18 lakhs इज रेंटल. सो वी कैन लुक एट दिस लेटर. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज दैट ही हैज हियर, देयर आर 2 बेसिक कंडीशंस, राइट? फर्स्ट, 182 days और मोर इन द प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर. सेकेंड वन, प्रीवियस ईयर में 60 days रहना एंड प्रीसीडिंग 4 previous years में 365 days रहना. So if you see residential status here, थोड़ा ज्ञान उसके बारे में, at least he should have been in India for 182 days. कितना दिन है ये था 135 days during the previous year. He stayed in India and during FY 24-25 he stayed in India for 135 days. Okay, तो first condition did not match. Second condition देखे तो ना 90. So second condition, at least 60 days he should stay in India. He is in India for 135 days, perfect. And then
He should also have been in India for 365 days in the last immediately 4 preceding previous years. तो इसने था 90, 60, 70 एंड 85, तो पूरे मिला के भी 305 डेज हो रहा. तो सेकेंड बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड. बेसिकली ही इज़ अ नॉन रेसिडेंट. ठीक है, वी कैन कंक्लूड आवर आंसर हियर इटसेल्फ. बट थोड़ा ज्ञान तो बनता है ना. ठीक है, तो देखे तो ना, देर इज़ एन एक्सेप्शन टू द सेकेंड कंडीशन. मतलब तुम्हारा सेकेंड कंडीशन इग्नोर कर सकते, ओनली फर्स्ट कंडीशन विल बी अप्लीकेबल. फॉर whom? When that fellow is an Indian citizen or a person of Indian origin. Yes, this fellow is a person of Indian origin. He is resides outside India, keeps visiting India. Yes, he also visits India. He is having a Indian income. Okay, he is having Indian income up to 15 lakhs. If he is having Indian income up to 15 lakhs, no, you can ignore the second basic condition. Okay, but इसका इनकम देखे तो ना 18 lakhs उसको रेंट में मिल रहा, विच इज़ मोर देन 15 lakhs. सर चलो यहाँ पे एक बार देखो, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ही इज़ हैविंग एनी बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया. यस, ही रिसाइड्स इन दुबई. ओके, ही इज़ डूइंग सम कंसल्टेंसी प्रोफेशन देयर. परफेक्ट. ही इज़ विजिटिंग इंडिया. यस, ही इज़ विजिटिंग इंडिया. और इंडिया में भी इनकम है अप टू 15 lakhs. अगर उसको इंडिया में इनकम अप टू 15 lakhs है ना, तो यू कैन इग्नोर सेकेंड. बस 182 डेज़ का कंडीशन देखो और क्लोज करो. बट हिज इनकम इज़ मोर देन 15 lakhs here. Okay, 18 lakhs from rentals and 2,15,000 as dividends. So his income is more than 15. Then what if his income is more than 15 lakhs? Second condition is applicable. ये second condition जो है, instead of 60 days, it becomes 120 days. Okay, so it becomes 120 days now. So even if it is 120 days, no, if you see, he is in India for 135 days. So 120 days condition is satisfied. But ये 365 days का condition satisfy कर रहा है क्या? The answer is no, because only 305 days he's been in India in the last preceding 4 financial years. So even this condition is also, even in this case also, he's a non-resident. Second basic condition is not applicable only for him. तो एक बार notes download कर लेना आप लोग, देखना फिर से मैं बोलता हूँ. So this exception फर्स्ट सेकेंड कंडीशन ज़रूरत नहीं है, एक एक्सेप्शन है उसके लिए. इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन डूइंग एनी बिजनेस एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, कीप्स विजिटिंग इंडिया, एंड ही ऑल्सो हैज़ एन इंडियन इनकम अप टू 15 lakhs. ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन इज नॉट नेसेसरी. वॉट इफ इज हैविंग मोर देन 15 lakhs? इफ इज हैविंग मोर देन 15 lakhs, नो, सेकेंड बेसिक कंडीशन इज अप्लीकेबल. बट इंस्टेड ऑफ 60 days, नो, इट बिकम्स 120 days. तो नाउ येस 120 days लो और कैलकुलेट करो. ठीक है, 120 days बोले तो ही इज़ इन इंडिया फॉर 135 days. परफेक्ट. बट प्रीसीडिंग 4 years में ही इज़ नॉट मोर देन 365 days. ही इज़ ओनली हियर फॉर 305 days. सो सेकेंड कंडीशन इज़ नॉट अप्लीकेबल. ही इज़ नॉट सेटिस्फाइंग सेकेंड कंडीशन ओनली. एंड 182 days का कंडीशन तो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइंग बिकॉज इज़ ओनली देयर फॉर 135 days. अगेन ही इज़ नॉन रेसिडेंट. परफेक्ट, नो. और थोड़ा ज्ञान, एक्स्ट्रा ज्ञान डीम डिविडेंड का. दिस इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन. If you see more, no, he is also having 23,50,000 as consultancy income from Dubai, but not liable to tax in Dubai. He is having income in Dubai also, but that is not taxable anywhere. And he is having income in India which is more than 15 lakhs. Then in that case, no, अपन उसको deemed resident मान लेते हैं. ठीक है, इंडिया में 15 लाख से इनकम है उसको, और फॉरेन इनकम जो है that is not taxable anywhere. ठीक है, then that fellow we will consider him as deemed resident. But provided he is an Indian citizen, that section is applicable only for Indian citizen. This fellow is a person of Indian origin. He satisfies all the conditions. He's having an Indian income of more than 15 lakhs, and his Dubai income is also not taxable anywhere. Okay, consultancy income from Dubai, not taxable in Dubai. Okay, so he's satisfying all the conditions. Outside income not taxable हो गया, Indian income में 15 lakhs हो गया, but he should be an Indian citizen. This fellow is a person of Indian origin. Okay, so that's why this is not applicable. This provision is not applicable to him. Perfect, no? So let's see the answer now. So what will be the residential status? We have determined that fellow is a non-resident. No questions now. We have covered all the topic here. It might be little lengthy, but covering all these topics is important because you never know. Deemed resident के बारे में question आ सकता है. Just because deemed resident का concept इसमें नहीं है, एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, तो वी आर कवरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चंस. ओके, व्हाट विल बी द TDS TCS implication on purchase of car by Mr. Amit? So he's talking about purchase of car. TCS का एक प्रोविजन है. इफ द कार वैल्यू इज मोर देन 10 lakhs, then you have to deduct TDS of 1%. ठीक है,
So let's see. Seventh wala question, where is the car thing? Okay, here if you see, for convenient travel in India, he purchased a car on 15/5/2024 worth rupees 11 lakhs. 11 lakhs, again car value is more than 10 lakhs. Okay, so seller has to collect TCS. We are talking about tax collected at source, TCS. TDS apply नहीं होता इसको. तो car dealer, yes, he's purchasing from car dealer only. He also purchased equity shares and all that we will see later. Okay, so car value more than 10 lakhs. This ये जो dealer है ना, that fellow has to collect TCS. So no TDS is applicable. Answer is no. TDS is applicable on purchase of car. Is a deemed resident? No. So tax is required to be collected at source 1% on the value of car exceeding 10 lakhs. No, on the entire value. So this is also wrong. So if you see, tax is required to be collected 1% on 11 lakhs since value of car exceeds 10 lakhs. Simple. कार का वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा हो गया तो 1% TCS कलेक्ट करो ऑन द एंटायर वैल्यू 11 लाख के ऊपर. ठीक है, डन. Now what is the total income? इसका total income, we have seen all the incomes. No, what is the total income? Let's calculate. बस इनकम कैलकुलेट करो बोल रहा. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखे तो ही इज़ हैविंग 9 lakhs फ्रॉम कंसल्टेंसी प्रोफेशन. डिविडेंड के ऊपर 2,15,000 है एंड 18 lakhs फ्रॉम रेंटल्स. ओके, ही इज़ हैविंग दीज इनकम्स. एंड देन द अदर वन इफ यू सी हियर, नो, देयर इज सम शेयर, इक्विटी शेयर्स of Reliance. He purchased okay, he also purchased Reliance Limited for 4,25,000 on 5th May 2024. He purchased those shares and sold on 24th December 2024 for 6,15,000. He sold those shares, okay, for 6,15,000 and he's making certain profit. So this will also come in, in your total income. Okay, let's calculate the total income here first. तो यहाँ पे कंसल्टेंसी 9 lakhs है ना, उसके अगेंस्ट he spent 2,400 to earn deemed dividend. So there is a deemed dividend income here, no, 2,50,000. He spent 2,400 करते. You will not get deduction for this. And 2,50,000 for consulting profession in India. So he has earned 9 lakhs for consultancy profession. He also spent 2,50,000. That is allowed as deduction. Okay, 9 lakhs. मैं से 2,50,000 deduct करो. 6,50,000 is your ultimate total income. And deemed dividend, if you say 2,15,000 is your deemed dividend. यहाँ पे रेंट देखे तो ना 18 lakhs इज देयर. उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको मिलता. तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालो एंड 12,60,000 इज द एक्चुअल टोटल इनकम. ओके, एंड सेल ऑफ शेयर्स एज वी हैव सीन 6,15,000 को ही सोल्ड एंड ही परचेज फॉर 4,25,000. सो अगेन 1,90,000 1,90,000 इज योर गोज टू योर टोटल इनकम. ओके, तो इफ़ यू एड 6,15,000, 2,15,000, 12,60,000 and 1,90,000, you will get a total income of 23,15,000. Okay, you pause the video if you want to do it for yourself. Okay, the answer is A, 23,15,000. यहाँ पे कुछ ग्रीक एंड लैटिन नहीं है. यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये है कि पहले तुम्हारे को 3 इनकम दे दिया उन्होंने. सो ही गेव यू योर 9 lakhs, 2,15,000 and 18 lakhs बोल के एक पैराग्राफ में दे दिया. बट नेक्स्ट पैराग्राफ में दूसरा इन्फॉर्मेशन दिया सेल ऑफ शेयर्स बोल के. सो यू नीड टू बी अ लिटिल अलर्ट इन दैट केस. ड्यूरिंग एग्जाम इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता अपने को. दैट इज़ द ओनली चैलेंजिंग पार्ट हियर. अदरवाइज टेकिंग टोटल इनकम वॉज एन ईजी पार्ट. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो आंसर इज योर 23,50,000, 23,50,000. Perfect, no? Compute the tax liability. He's asking you to calculate the tax liability now. Okay, तो यहाँ पे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस ऑल्सो विल कम इन टू प्ले. दैट इज़ इंपॉर्टेंट. ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऐसी नहीं दिया. यहाँ पे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस भी है विच यू शुड नो. सी दिस फेलो इज वर्ड नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट को डिविडेंड इनकम के ऊपर फ्लैट 20% टैक्स रेट गिर दो. 115 ए या 115 बी बोल के एक सेक्शन रहता है, उसमें फ्लैट 20% टैक्स रेट गिरेगा. सो 2,15,000 के ऊपर 20% इज योर 43,000. आई होप यू कैन सी दिस. And then your sale of shares is your short term only, no? If you see sale of shares, he purchased on the same year and sold it also in the same year. 5th May को purchase करा and he sold it on 24 December. Not more than 12 months. So 111A is applicable. In that case, the tax rate is 20%. On 1,19,000, tax rate is 20%. Okay. 2 special rates of taxes पहले अपन निकाल दिए. तो total income में से थोड़ा income तो कम हो जाएगा. You will remove this 1,90,000 and 2,15,000. ओके, नो बाकी का कितना बच गया? 12,60,000 एंड 6,50,000 इज़ द लेफ्ट ओवर. सो दैट कम्स टू योर 19,10,000. ठीक है, ऑन दैट इफ यू कैलकुलेट द टैक्स रेट बिकॉज ही इज़ यूजिंग डिफॉल्ट टैक्स रिजन, ओके, अंडर न्यू स्कीम.
So for the first 14 lakhs, sorry, for the first 15 lakhs, the tax amount is 1,40,000, and over and above 15 lakhs it is 30%, right? 1,90,000 up to 15 lakhs यहाँ पे आ गया, तो बैलेंस के ऊपर 30% टैक्स रेट. इफ़ यू रिमूव यू विल गेट 2,63,000, and then special rates of taxes you should add 43,000 and 38,000, you should add them. Total tax will come to 3,44,000. उसको 4% सेस ऐड करना मत भूलना. Okay, then you will get 3,57,760. Perfect, no? Great. Now the next question is about updated return. ठीक है, थोड़ा कुछ पैडलिंग है इसके बारे में, उसके बाद I'll tell you the concept. While collecting the information for filing of income tax return assessment year 25-26 on 15th July 2025, Mr. Amit noticed that he has failed to claim a refund of 10,000, representing tax deducted as chose by his client, Ms. Arora and Arora Associates, during the previous year 22-23. He then approached a tax consultant, Mr. Jagat, to file an updated return for financial year 22-23. Mr. Jagat जो है assured him that the entire amount of TDS can be claimed for filing updated return. अपडेटेड रिटर्न यू कैन फाइल, कब तक फाइल कर सकते हो? असेसमेंट के ईयर के बाद 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर. ओके, टिल दैट टाइम यू कैन फाइल योर अपडेटेड रिटर्न. सी, अगर फाइनेंशियल ईयर 22-23 का है तो उसका असेसमेंट ईयर हो गया 23-24. 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर इज़ योर असेसमेंट ईयर 25-26. दैट इज़ 31st March 2026 तक यू कैन फाइल योर अपडेटेड रिटर्न. नाउ तो वी आर डेफिनेटली within the bracket only. This person can file the updated return, but the question is, the reason he's filing is to claim refund of 10,000. Updated return में ना, if you can file updated return only when you want to increase your tax liability or you want to pay the tax amount. Okay, in that cases you can file updated return. You cannot file updated return when you want to claim refund or you want to reduce your tax liability. You cannot. So this is purely in favor of the department, not in favor of the assessors. So here he wants to file updated return because he wants to claim 10,000 ka refund. Okay, so he cannot file updated return. Chalo. No updated return cannot be filed can be furnished for the purpose of claiming refund even if 24 months have not elapsed from the end of the assessment year. Yeah, even अगर 24 months पे elapse नहीं हुआ, you cannot file because if you want to claim the refund. So answer is A. You don't have to read the other ones. So 10th on answer A. Then so अभी इंडिविजुअल केस सिनारियोस में आ रहे हैं अपन. सो यहाँ पे देखे तो ना, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड बाइज प्रोडक्ट फ्रॉम फिनटेक सॉल्यूशंस. ओके, दिस फिनटेक सॉल्यूशन यूनिट इज लोकेटेड इन IFSC. Okay, worth rupees 63 lakhs. Okay, turnover of fintech and fintech solutions and global private limited is more than 11 lakh 5 crores and 15.5 crores. So यहाँ पे ना ये 194Q की और 206C 1H क्या है वो, या 206C 1H के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, 194Q क्या बोलता, तुम अगर करेंट ईयर में इफ़ यूर परचेजिंग मोर देन 15 lakhs and your previous year turnover is more than 10 crores, then at the time of making payment you have to deduct TDS 194Q. सेम एग्जैक्टली 206C 1H सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर दो. सो दिस 194Q इज फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू. लास्ट ईयर का टर्नओवर should be more than 10 crores and if you're purchasing more than 50 lakhs in the current year, then TDS 0.51% you have to deduct. But if you see 206C 1H, seller last year, seller का turnover is more than 10 crores, correct? यहाँ पे दोनों का turnover is more than 10 crores and the purchase value is also more than 50 lakhs. You know, sales value is more than 50. एक purchase कर रहा बोले तो दूसरा सेल कर रहा है. ठीक है, in excess of 50 lakhs TDS 0.1%. कार के रिलेटेड पूरा परचेस वैल्यू के ऊपर अपन TCS करें, बट हियर इन दिस केस नो, ओनली एक्सेस वैल्यू 50 lakhs के ऊपर जो एक्सेस वैल्यू होता उसके ऊपर इस TCS निकालना होता. TDS ऑल्सो सेम, ओनली ऑन द एक्सेस पार्ट. ओके, बट यहाँ पे देखे तो इफ़ यू सी, ये जो GPL है, ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इज़ द बायर, फिनटेक सोल्यूशन is the seller. This fintech solutions is the seller and that fellow is in IFSC. Fintech is in IFSC. Okay, so when GPL is buying, he will make the payment. Okay, when he is making the payment of 63 lakhs because it is more than 50 lakhs, he is not required to deduct TDS because his seller is in IFSC.
वो कुछ क्रेडिट ले लेगा, कुछ 80 डिडक्शंस ले लेगा, उसको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं होती, तो बेकार में TDS काटने की ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194Q, समझ गया। बट एट द सेम टाइम व्हेन फिनटेक इज़ selling goods to GPL, he is required to deduct TCS. He is required to collect TCS because GPL is not from IFSC. ओके, अंडरस्टूड नो, आराम से समझ में आ गया ना। तो फिनटेक शुड कलेक्ट TCS ऑन द एक्सेस पार्ट, जो 13 लाख एक्सेस हो रहा है ना 50 लाख के ऊपर, ऑन दैट फिनटेक लिमिटेड हैज़ टू कलेक्ट 0.1% TCS, समझ गए। GPL इज़ नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज फिनटेक इज़ इन IFSC। जब तुम IFSC में होते हो, अगर अगर इफ़ बायर इज़ इन IFSC, ओके, समझो, अगर बायर IFSC में है, देन द सेलर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TCS. Seller is not required to collect TCS if this fellow was in IFSC. For example, if this fellow was in IFSC, buyer wasn't from IFSC, then seller is not required. Oh shit. Okay, let's go. Yeah, if agar for instance, if you see, if he is from IFSC, if buyer is from IFSC, then seller is not required to collect TCS from him. Now here seller is from IFSC, buyer is not deducting TDS under section 194Q. जो भी IFSC में होता, opposite person को उसका जो section है वो apply नहीं होता. Clear, no? Perfect. So let's see, fintech solution is required to collect. This is correct. Fintech will collect 0.1% TCS only on the excess part. Answer is A. I'm not reading the other ones. Yeah, I'm not reading the other ones. Yeah, you're correct. So last question, I'm telling you. Thanks for watching this video till here. I hope if this video was helpful, please do subscribe and show some support. I definitely need some support because these are the initial stages and it will give me hope and to go into this teaching profession. Let's go. ABC Limited was merged with XYZ Limited. पक्का ओके, ABC Limited merge हो गया XYZ Limited से, pursuant to order of High Court dated 10th August 2026. XYZ Limited already filed its return of income for assessment year 25-26. ओके, रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया, उसके बाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आया. Before the date, on the date of High Court order, the assessment of assessing officer 25-26 was pending. Okay, High Court order, the assessment of assessment year 25-26 was pending under section 143(3). Which of the following are the compliance obligations on the successor entity and what is the fate of pending assessment pursuant to merger? ठीक है, यहाँ पे पहले अपन थोड़ा समझेंगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ द केस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब ABC लिमिटेड मर्ज्ड विद XYZ लिमिटेड, नो, तो रीऑर्गेनाइजेशन का केस है. सो फ्रॉम 1 अप्रैल, एग्जाम्पल, फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, इन दिस ईयर रीऑर्गेनाइजेशन हैपन. After the end of the year, you filed your return of income. Okay, then after filing your return of income, you got the High Court order. Okay, High Court order आया ना, तो कब आया High Court का order? If you see here on 10th August, order of the High Court dated 10th August 2026. You got the order on 10th August. ठीक है, 10th August से लेके end of the month, 10th August का end of the month को लेना. Within a period of 6 months, you have to file a modified return. That is the whole game here. Okay, तो AO क्या करेगा इसमें? When you file the modified return, he will consider the High Court order and also your modified return to complete the assessment. Clear? High Court order भी देखेगा और तुम्हारा modified return भी देखेगा because you already filed your return, no? High Court order आया उसके बाद तो तुम क्या करोगे? End of the month से लेके 6 months, end of the month से 6 months you will file the modified return. Clear? So AO will consider the High Court order and modified return to complete the assessment. Now let's see the options. Assessing officer will proceed to complete the assessment of assessment year 25-25 in line with the order of reorganization and the modified return. That is correct. XYZ Limited has to furnish a modified return within 6 months from the end of the August. This is also correct. 1 and 2 are correct. The pending assessment will abate. No, ये block assessment की बात नहीं हो रही यहाँ पे. XYZ Limited has to furnish modified return within 6 months from the date. No, from the date नहीं, order आया अगस्त में, end of the month से 6 months. Okay, so this is also wrong. 1 and 2 are correct. So the option is C. Okay, I hope this video was helpful, guys. Please do subscribe and like, and see you all in another video. As I said,
many videos will be coming. Please do be active in the Telegram channel also. Subscribe to my Telegram channel. Subscribe to this channel also. And let's go. See you all in the next video.